And let's see this beautiful problem on a straight line t over 1 plus t square, and y-intercept is 1 minus t square over 1 plus t square. Now let LT and LT plus delta t intersects at a point PT whose coordinate is x and y as a function of t. Further, suppose slope of LT is tan theta, where theta is the usual angle the way you describe in trigonometry. Note that t equals 0 and t equals 1 is assumed to be the line coincident with axis. This I have to impose because if I'll keep t equals 0, x by 0 is meaningless. So separately I could define it like piecewise. Now you need to match the following. First question is find the x coordinate of point PT in the limiting case when delta t tends to 0. Second question is y coordinate. Third is set of points as t is 0 to 1. So that lies on which of the curve given in the other options. And last is area bounded figure. Okay, so let's see how to go about this problem. Now more than solution, I'll give you line of thought and how the thought process should be developed. So सबसे पहले जो है इस लाइन को हम एनालाइज करते हैं. ये लाइन का मतलब क्या है? तो देखो इस लाइन को एनालाइज करने का बेस्ट वे है, सपोज इफ आई टेक अ केस व्हेन टी इज टेंडिंग टू 0 एंड टी इज टेंडिंग टू 1. तो इस केस में हम देखना चाहेंगे लाइन कैसा बिहेव कर रहा है. तो अगर टी 0 के आसपास गया तो इक्वेशन बनेगा x बाई 0 प्लस y बाई 1 इक्वल्स 1 बाई 1. सो इन दैट सेंस वी आर गेटिंग x बाई 0 by y by 1 equals 1. Similarly, for t tends to 1, the expression that I'll get is x by 2. Of course, this 2 and 1 is limiting case, but I'm trying to do it in a special case. So, x by 2 by y by 1 is going to be y by 2. So, which you can clearly see, for t equals 1, it's y by 0. So, we have x by 1 plus y by 0 equals 1. So now if we plot these two, so it's no wonder the graph that I am going to get is a very special point. And we have in the first case x intercept is 0, y intercept is 1. So we'll have this line segment. In the second say we have another line segment 0 to 1. Okay, now let's try and play with some other variable. Let's say if I try with t equals half. Exactly in between. So we have x by 1 plus y by 1. 1 minus 1 by 4 is 3 by 4. And half pay 1 by 5 by 4. So that gives you x by 5 by 4 plus y by 4 by 5. So we can divide by 5 by 4. So we'll have 4 by 5. Divided by 3 by 5 y over 3 by 5 equals 1. तो यहाँ से आप देख सकते हो जो 4 by 5 and 3 by 5 जो है दिस इज ए स्पेशल नंबर बिकॉज 4 and 5 इज फॉर्मिंग पाइथागोरस ट्रिपलेट. 3, 4, 5 इज फॉर्मिंग पाइथागोरस ट्रिपलेट. तो यहाँ से हमने क्या एक फील आ रहा है जो 4 by 5 होल स्क्वायर प्लस 3 by 5 होल स्क्वायर इज 1. ओके, सो इट मीन्स इफ दिस डिस्टेंस इज 1, this distance is 1. So x and y coordinate for that other configuration t equals half is such that the length of this ladder is st1. Okay. Now is it true in general? So can I tell like if I'll take some other value of t, say still is having length 1, or some other t equals t1, will it give a still length t1? तो अगर हम t को ऐसे चेंज करते रहेंगे और सपोज लेंथ इज कमिंग t1, so we'll get a kind of envelope. Kind of envelope means extreme boundary, right? Extreme boundary will get here. ये feel से आ रहा है. And all these lines will behave like a tangent on these boundaries. Okay, I hope it is clear. So that is the basic understanding of the problem. But before I go further, पहले तो हमको prove करना होगा about this intercept का square का sum is it 1 or not. Okay, which we doubted. So we can write the given expression in this form. Plus y by dividing by 1 plus t square. 1 minus t square by 1 plus t square equals 1. अब it's no wonder because I can sense now this 2t by 1 plus t square is giving a feel of 2 tan theta by 1 plus tan square theta. Similarly, this is giving a feel of 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta. So यहाँ से there are many ways to look like the square of this quantity summation is definitely 1. So one way of looking is you can feel like putting tan equals some t equals tan theta, and that converts this into sine 2 theta. The other expression becomes cos 2 theta.
and clearly the sum of whole square is 1. It means sum of intersect square is 1. The other ways to feel is using Pythagoras triplet. So let's say if I assume a triangle with a 1 plus t square as hypotenuse and 2t as the base. So clearly this is going to be 2t whole square minus 1 plus t whole square ऐसा होगा. तो यहाँ से मेरे पास आ गया 4t square minus 1 plus t square whole square. अब this quantity is 4t square minus 1 minus t4 and minus 2t square. So that can be written as minus t square minus 1 whole square. Now this is not defined. So instead of taking a triangle, let's say 2t and 1 plus t square, what you could have taken, a hypotenuse as 2t and let's say perpendicular is 1 plus t square. So now base will be the other way of realizing this is we can think of a right angle triangle having hypotenuse as 1 plus t square and perpendicular as 2t. तो ये कैलकुलेशन will be 1 plus t square whole square minus 4t square. तो ये जो निकल के आ रहा है it's a minus b whole square, so 1 minus t square compound which is 1 minus t square, because right now we are in the realm of t equals 0 to 1 given in the problem. तो फिर ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है. तो इसको अगर मैं स्क्वायर करूँ तो टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर ये साइन फाइव जैसे बिहेव कर रहा है अगर फाइव वेरिएबल एंगल क्लियरली डिपेंड्स ऑन टी, और ये एक कॉस फाइव जैसा बन रहा है. तो फिर से इसका सम ऑफ स्क्वायर्स विल बी डेफिनेटली. तो नाउ वी आर श्योर लाइक दिस इज द फैमिली ऑफ लाइन्स सच दैट इट्स डिस्टेंस, okay, the length of that line segment is always fixed. Length of this line segment is fixed to be 1. So now I can treat this question as a ladder problem where we have 2 point P and Q. Point P is sliding on y-axis and the threshold limit is from 0 to 1 it can slide. Point Q is again sliding on x-axis from 0 to 1 in such a way that this length is always invariant. So it's a solid ladder, solid stick which is sliding over this coordinate axis. अब इस टाइप का प्रॉब्लम आप फिजिक्स में भी सॉल्व करते हो जहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट का वेलोसिटी पूछ जाता है. लेकिन अब यहाँ पे इन दिस क्वेश्चन व्हाट आई हैव आस्क्ड, यू सी डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस लाइन विल हैव दिस फैमिलीज ऑफ लाइन्स जनरेटेड. What I'm asking is the locus of the point of intersection of any two line in limiting position. मतलब indirectly I'm asking of locus of this curve which I mentioned here. So this part of curve. Okay, this curve is basically known as envelope. So just have to read the instruction of problem and accordingly do. तो अब देखो प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, let LT and LT plus delta T intersects at a point PT. So suppose if I take a line LT over here corresponding to T, and if I take LT, let's say it makes an angle theta. अब अगर मैं थोड़ा इसको T को slide करूँ, okay, like if I take another point T plus delta T, so corresponding to this we'll have another line and having maybe theta plus some d theta or delta theta, but I do right as a little change in angle. So clearly the point of intersection of these two lines I am calling it PT. And we have to find the locus of this point of intersection for every such t belonging to 0 to 1, right? And for that locus we'll get a curve and we need to identify what kind of curve it is. तो ये बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है. इसमें हम एक और बात यहाँ पे ऐड कर रहे हैं कि अगर कोई बच्चा इसको और फील करना चाहे लाइक 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, तो इसको ग्राफिकली भी यू कैन फील. Okay, so 2t by 1 plus t square in 0 to 1 you can clearly say at 0 it's 0 और 1 पे जो होगा ये जो ग्राफ होने वाला है ये 1 पे it's going to be 1. तो ये कुछ इस टाइप का फीलिंग आएगा, ठीक है ना. This again you can see by dividing by t, so we have 1 by t plus t, and even one number is getting equal to t because anyway we are interested in positive, so ये चीज़ 1 से छोटा होगा. Similarly if you look at 1 minus t square 1 plus t square, so clearly ऊपर वाला is less than 1, नीचे वाला is more than 1, so overall fraction is less than 1, t belonging to 0 to 1 में. अब 0 पे ये 1 होने वाला है और फिर 1 पे 0 होने वाला है, तो कुछ इस टाइप का फंक्शन जनरेट होगा. अब यहाँ से आपको फील भी आ रहा है इफ़ आई टेक एनी हाइट, लेट्स से दिस हाइट एंड प्लस दिस हाइट एंड यू स्क्वायर इट, दिस स्क्वायर प्लस दिस हाइट स्क्वायर, इट्स ऑलवेज 1.
because one graph is decreasing, other is increasing at the cost of other. So in fact, mathematically also, algebraically, you can add these two expressions. It's always fun because this kind of technique is used anywhere, even in ITF and substitution. तो आपका ग्राफ जो आने वाला है ना, वो बहुत ही शानदार इस टाइप का ग्राफ ही है दोनों फंक्शन को अगर आप ऐड करोगे तो. सो ये ऑलवेज जो होगा, ठीक है, इट विल ऑलवेज स्क्वायर अप टू दैट. ओके, सो दिस आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, यू कैन फिल इट ग्राफिकली. ठीक है, चलो वापस क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो अब क्वेश्चन तो आप समझ गए, हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे एट सम पर्टिकुलर टी, और फिर हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे टी प्लस डेल्टा टी पे. इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और जैसे ही हमने इक्वेशन को सॉल्व किया तो मेरे पास जो आंसर आएगा वही उसका लोकस होगा. तो अब टी में सॉल्व करना थोड़ा यहाँ पे मुश्किल लग रहा है, ऑफकोर्स नामुमकिन नहीं है क्योंकि ये एक्सप्रेशंस थोड़ा क्लमजी है, तो हम थीटा में ही इसको सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, तो अब आई विल डू एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ थीटा बिकॉज इफ टी इज फिक्स तो करस्पॉन्डिंग टू दिस line is fixed. If line is fixed, so theta is fixed. So for some particular value of t, okay, and this corresponding to some value of theta, let's say we have this situation of the line, and इस situation को if I am calling at let's say AB in the initial situation, ठीक है, और फिर if I little bit change the parameter t, it went here, and let's call it another situation CD. ठीक है, तो मेरे पास इनिशियली जो एंगल का वैल्यू था, लैडर हैज स्लाइडेड लिटिल बिट, लेट्स से इन द न्यू कॉन्फ़िगरेशन द एंगल दैट इट हैज गिवन इज थीटा प्लस डेल्टा थीटा. सो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन वाज AB, इन न्यू कॉन्फ़िगरेशन आई एम कॉलिंग एट CD. ऑल दैट आई नीड टू फाइंड इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. नाउ नॉट दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ से आप क्या फाइंड कर सकते हो, इसका x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट. सो व्हाट अबाउट दिस लेंथ AC? We know since this is theta plus delta theta and this is theta, so this is small angle will be delta theta. Remember, we will find this in the limiting case. So hence we have this as delta theta, right? So what about this length? AC. AC we know because the length of this entire line segment is 1. And corresponding to theta, we'll have this angle as pi minus theta. तो ये मेरे पास पूरा OA जो लेंथ है, OA लेंथ ये आ जाएगा 1 sin pi minus theta, so that is sin theta. And what about OC length? OC length is 1 sin pi minus theta plus delta theta. तो ये मेरे पास OC लेंथ जो आया ये निकल के आएगा sin of pi minus theta is again theta plus delta theta. तो AC लेंथ I can easily see it's sin theta minus sin of theta plus delta theta. और इसको वी कैन यूज टू साइन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला A माइनस बी बाई टू, टू साइन डेल्टा थीटा बाई टू इंटू कॉस A प्लस बी बाई टू. तो ये हो जाएगा थीटा प्लस डेल्टा थीटा बाई टू. नाउ इन द लिमिटिंग केस आई एम इंटरेस्टेड इन द केस व्हेन थीटा इज टेंडिंग टू 0. तो इसको अप्रॉक्सीमेटली हम बता सकते हैं बाय स्मॉल एंगल और बाय द लिमिटिंग फार्मूलाज. लिमिट sin theta tends to 0 will behave like theta, so it's cos of A theta बन जाएगा. So this is gone and we have cos theta d theta, right? So AC length is known to us. Similarly, which is basically derivative of sin theta times d theta, and which was obvious. Similarly, अब आप दूसरा लेंथ भी निकाल सकते हो. ठीक है, जैसे ये लेंथ BD वाला जो लेंथ होगा वो if we'll calculate, so we'll get cos theta minus cos theta plus delta theta, and this we want in the limiting case limit when delta theta tends to 0. And by transformation formula similarly I can tell approximately it will be sin theta d theta. Once these two lengths is known, now we can also relate let's say B and BD. So suppose if we have a point over here E, तो BE और BD में क्या रिलेशन हो जाएगा, वो tan theta का रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट आया वो आ गया tan of theta plus delta theta, and since pi minus that is there, so it's minus this equal to perpendicular by base. Okay, perpendicular by base, so that will be BE divided by base, and base is BD, and BD we know it's sin theta. Since theta tends to 0, तो फिर आप इसको इमिट कर सकते हो. तो यहाँ से जो BE का वैल्यू आया वो आ जाएगा माइनस tan theta sin theta.
I hope it is clear. Okay, now you can use similarity in both triangle. आप इस ट्रेंगल और इस ट्रेंगल में सिमिलरिटी का यूज कर सकते हो. एंड द मोमेंट यू विल डू सिमिलरिटी, वहाँ से जो आपका आएगा कर लो प्लस एंड माइनस साइन. सो व्हाट आई एम गिवन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रेशियो. ठीक है, अब यहाँ से आई एम लिविंग इट फॉर द यू, और द कोऑर्डिनेट जो आपका आएगा दैट इज गोइंग टू बी कॉस क्यूब माइनस थीटा बनने वाला है, और वहाँ से बनेगा साइन क्यूब माइनस थीटा. तो फाइनल आंसर आपका आएगा माइनस कॉस क्यूब थीटा एंड माइनस साइन क्यूब थीटा. ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन द वे आई हैव डिफाइंड थीटा. अब क्वेश्चन में थीटा इज डिफाइंड अदर वे बिकॉज थीटा इज द एंगल विच लाइन एल टी मेक्स इट पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो अगर उस हिसाब से देखें तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, दूसरा का आ जाएगा माइनस साइन क्यूब थीटा. लोकस जो आएगा सेट ऑफ पॉइंट्स एच टी बिलोंग्स टू 0 to 1, दैट आप सॉल्व कीजिएगा बाय एलिमिनेटिंग कॉस एंड साइन. So you'll get sin square theta plus cos square theta equals 1. So this will be the locus. Now this locus will be, the curve will look like something like this. And now you can integrate the curve 0 to 1 yx dx. This either you can use using Wallis formula or direct integration कर लीजिएगा. तो वहाँ से answer will get is 3/8. So answer for first will be P, which is minus cos theta according to my definition. It will be sin cube theta or cos cube if I would have defined theta from नेगेटिव एक्स एक्सिस इन क्लॉकवाइज सेंस. राइट, अब वाई टी का आंसर आ गया माइनस क्यू, थर्ड का आंसर आपके पास एस आ गया, और फोर्थ का आंसर टी आ गया. मैं हाफ प्रॉब्लम को आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप फाइनल कैलकुलेशन पार्ट देख लेना, बट आई होप यू हैव एंजॉयड द प्रॉब्लम.